Hello everyone, welcome to my channel. So as I am discussing regarding the national immunization schedule, and already I have discussed the actually I have divided the national immunization schedule into part 1, part 2 and part 3 so that it will be easy for you to understand and it will not be in one single video. But whenever you write the national immunization schedule, that time you have to write together. Okay, so in part 1 I have discussed, part 2 I have discussed, so today I am going to discuss about the last part, that is part 3. So again let's revise once. Introduction. Vaccination is a simple, safe and effective way of protecting you against harmful diseases. Immunization means क्या है? It is the process of giving vaccine. Vaccine हम लोग जैसे देते हैं, the process we used to go through, that is called immunization. Why immunization is giving? Why immunization is to be given to the patient or the child, sorry, not the patient, to the child, to protect them from disease or to protect them from any kind of infection. Clear? Then next is, first in the first part I have discussed about this pregnant women. For pregnant women, what this one is given, vaccine is given, TD1, TD2, TD booster is given. For infant I have discussed in the part 2, Bacillus calmette-guerin, hepatitis B, OPV 0 dose, first dose, second dose, third dose, and penta first dose, second dose, third dose, and vaccine PCV 1, then rotavirus vaccine 1, RVV 2, RVV 3. Then inactivated polio vaccine first dose, inactivated polio vaccine second dose, measles rubella first dose, and Japanese encephalitis first dose, vitamin A first dose. So all this we have discussed in the last 2 videos. So today we are going to discuss about for children. मतलब हम लोग children को क्या क्या वैक्सीन देते हैं. तो immunization schedule is divided in the 3 part. Okay, 3 part means first one is for pregnant women, second is for infant, and third is for children. So what you have to do, when you divide these 3, then it will be easy for you to remember what kind of vaccine you are giving. So today we are going to discuss about for children. So for children, what vaccine you are going to give? You are going to give DPT. D means diphtheria, P means pertussis, T means tetanus. Okay, so DPT booster dose you are going to give, which is the first dose. DPT booster first dose you are going to give in the 16 to 24 month. Clear? Then dose you are going to give 0.5 ml intramuscular anterolateral side of mid-thigh. The side you have to write in the exam, and all these dose, rules, side is very important whenever you are writing immunization schedule. Clear? Then इन्फेंट पीरियड में हम लोग ने MR दिया था फर्स्ट डोज, तो अभी MR सेकेंड डोज कहाँ पे देना है? MR सेकेंड डोज वी हैव टू गिव इन द 16 to 24 month. Again it will be 0.5 ml subcutaneous right upper arm. और एक बात याद रखना, डोज में 0.5 ml मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वी आर गिविंग इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. सो ज़्यादातर 0.5 ml ही देते हैं. ओनली देयर आर सम few वैक्सीन यू कैन सी हियर. ये देखो IPV में सिर्फ 0.1 देते हैं, और ये IPV 1, IPV 2 ये सब 0.1 ml देते हैं. एंड देन अगेन ये सब 0.5 ही है. ओके, अगर ऑरल होगा तो 2 ड्रॉप्स ऑरल मतलब ड्रॉप्स ही होगा ना, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट. देन Bacillus calmette-guerin, this is you have to remember 0.1 ml. अगर 1 महीने से ज़्यादा हुआ 0.05 ml, अगर 1 महीने से छोटा हुआ. तो ऐसे याद रखो कि ज़्यादातर 0.5 ml ही देते हैं. ओके, डोज अगर याद नहीं रहता है तो 0.5 ml ही ज़्यादातर होता है. सिर्फ 0.1 कहाँ कहाँ देते हैं वो थोड़ा सा जोर डाल के याद कर लो. ठीक है. देन नेक्स्ट व्हाट इज़ दैट? We are discussing about DPT booster first dose, MR second dose, then OPV booster. OPV होगा मतलब oral से देंगे, मतलब 2 drops होगा, which is oral. Okay, by the name itself you can understand कि oral देना है, OPV booster देना है, because OPV first dose, 0 dose, second dose, third dose we have already given. So now
the booster you will give in the 16 to 24 month. Clear? Then JE second dose, this JE second dose you are going to give, because JE first dose कहाँ पे दिया था, यहाँ पे देखो JE फर्स्ट डोज हम लोग ने ऑलरेडी दिया है इन्फेंट में, कितना टाइम पे दिया था, 9 महीने में दिया था JE फर्स्ट डोज. अभी अगेन दिस वन, सॉरी, अभी JE सेकेंड डोज यू आर गोइंग टू गिव नाउ इन 16 to 24 month. क्लियर? 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म, ये सब याद रखना है, ठीक है. 0.5 ml याद रहेगा. सब मैक्सिमम इंट्रामस्कुलर ही है, सिर्फ कोई कोई वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस है, वो थोड़ा सा जोर डाल के याद रख लो, ठीक है. देन विटामिन ए सेकेंड डोज टू 9th डोज, मतलब विटामिन ए फर्स्ट डोज कब दिया था, 9 महीने में दिया था. तो अभी जो सेकेंड डोज होगा विटामिन ए का वो देंगे 16 to 18 मंथ में, और एवरी 6 month ऑफ इंटरवल में वो विटामिन ए दे के जाना है. टिल कब तक देना है, 5 years, टिल 5 years यू हैव टू गिव. देन 2 ml और 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट, 2 ml देना है orally. Clear? Okay. Then next, this one is OPV, DPT booster second dose, क्योंकि first dose हम लोग ने दिया था कब, DPT booster first dose we have given in the 16 to 24 month. तो अभी DPT booster you will give second dose 5 to 6 years. Again 0.5 ml IM देना है, upper arm में देना है, ठीक है. Then TD means what? T means tetanus toxoid, D means diphtheria. कब देना है, 10 years and 16 years, ये लास्ट में है, ठीक है. तो दिस इज 0.5 ml, हम लोग को पता ही है टीटेनस तो 0.5 ml ही होता है, IM देते हैं, अपर आर्म में लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विच इज़ वेरी 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 important. So please go through my all the videos, part 1, part 2, part 3, where I have covered nicely about the immunization schedule. Actually my screen recording is not working properly, that's why I am doing with my phone, so please excuse me for that. And I hope you have understood, and if you want the PPT then do let me know. I will put in the this one in one WhatsApp number I will give, where we can this one connect in that official WhatsApp number. Okay, so thank you so much everyone, have a good day, and if you have any confusion then please do let me know. Thank you so much.